to you on the ground to get the pulse of the people who have come out to cast their vote. I'm being joined right now by Sarul Patel. He is a spokesperson of the Congress. Sarul Patel, the situation on the ground, do you think the vote yatras of Rahul Gandhi will make an impact on the voters in Bihar? He has, the number of rallies and campaigning and canvassing that he has done is more than the number of rallies that and public engagements of Prime Minister Modi. Spectacular. Sorry. Megha, first of all, I would like to congratulate you and your entire team for the spectacular election ground coverage that you are giving. I have been watching it since the morning, and I think from what I saw on your TV channel, it is crystal clear that the people of Bihar are in the mood for change. And the so-called double engine, they are fed up with the so-called double engine sarkar, and they are going to change the bogus engine sarkar, and they are going to bring in the change in Bihar. And as far as the Rahul Gandhi ji's campaigns are concerned, I think they have been high voltage and energetic campaign. He has addressed numerous public rallies. He was on the road for more than 60 days throughout the yatra. So I think the people have seen what Congress Party Mahagathbandhan has to offer. Our manifesto is quite progressive, and we have the track record of delivering on our promises. So I'm sure people will take into account all this, and they will vote for change today, and they will choose Mahagathbandhan over the Thakbandhan that Bihar has seen for last 20 years. Okay. Do you think the campaign of vote theft by the Congress and Mahagathbandhan has resonated with the people? Because my reporters have been talking to the voters who have come out and cast their vote at the polling booths. Not one has spoken about the SIR controversy that was raised. Megha, the issues, they still remain. The Supreme Court is yet to give the judgment on the SIR. So I will not get into those details, because if somebody's their right to vote has been taken away, then they are obviously, your reporters are not going to find them at the voting booth today, because obviously they are not going to be in the list. So that doesn't mean that that doesn't remain an issue. So that is definitely an issue. And the people, as far as we can see and the reports that we are getting, that despite all their attempts of deleting voters, of preventing the people from voting and all of that, people are voting for change, and we are getting very positive reports from across all the districts. Okay, what do you feel about the Congress playing second fiddle to RJD, being a secondary party when it comes to the big faces that are fighting the election from Mahagathbandhan? Are you comfortable giving the floor to the RJD because it has consistently performed under Tejashwi Yadav's leadership? See, when there is an alliance, there are no second fiddles. BJP has been, by the same logic, BJP has been playing second fiddle to Mr. Nitish Kumar for last 20 years. Despite BJP claiming that the Prime Minister is the most popular leader in the country, then why is it the BJP is not taking the lead, and why is BJP playing second fiddle to JDU? So I think these all issues don't matter. In alliance, all parties have equal stakeholders. This is the attitude the Mahagathbandhan has. Whether it is Mukesh Sahani ji, who may be considering, contesting the less amount of seats, but he is as equal to us as RJD, and for RJD, we are as equal to them as Mr. Mukesh Sahani, and so on and so forth. So the question of second fiddle doesn't arise. All right. And then the question about Tejashwi Yadav as the chief ministerial face, there is a consensus within the Mahagathbandhan. Why do you think he is the ideal candidate to be placed as the chief ministerial face? See, I think across the country, we need young leadership. And I think Tejashwi Yadav's tenure of 17 months as a minister, he provided 7.5 lakh jobs in the one ministry that he had. So I think his track record speaks for himself. And
he has the vision and the energy to take Bihar forward. Unlike what Bihar has seen for last 20 years, I think Nitish Kumar ji has reached age where he can no longer perform, he can no longer work for Bihar, and I think that is why people are looking up to Mr. Tejashwi Yadav. Okay, all right. You seem to be, expressing disgruntlement with the performance of Nitish Kumar, but incidentally, Nitish was part of the Mahagathbandhan, and Mahagathbandhan unanimously chose him to lead Bihar and be the chief minister. All right. All right, let's also get in Badshah Alam. He is the spokesperson of the RJD. Mr. Alam, let's hear it from you about how the RJD has performed over the past several elections, whether it is Lok Sabha and more importantly the assembly elections. Do you think Tejashwi Yadav has what it takes to be the young leader that the people of Bihar will show their faith in? First of all, madam, I want to see you. The Bihar want to change in 2025, and later on in 2022, RJD is the largest party in Bihar, and the people of Bihar want to change and establish as a chief minister Mr. Tejashwi Kumar Prasad. Though then today is the first phase of the voter, and the voter want to change in Bihar election, and this happens in the booth C already. People in large number part to the vote their post. आलम जी, इस बारे में भी बात बताइए आप हमको, क्या कास्ट और रिलीजन का मुद्दा अहम मुद्दा बनेगा कि डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ एम्पावरमेंट के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, चाहे वो रूरल एरिया से हो, चाहे वो अर्बन एरिया से हो? देखिए, ये 2025 का इलेक्शन जो मैडम है ना, ये कास्ट बेसिस पर भी नहीं हो रहा है, ये रोजगार के ऊपर हो रहा है, ये पलायन के ऊपर हो रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हो रहा है, और हर तबके के लोग, हर बिरादरी के लोग एक मुश्त होके और महागठबंधन के फेवर में वोट कर रहे हैं, जिस तरह का यहाँ दिख रहा है सिचुएशन इस वक्त चल रहा है। तो बिहार में इस वक्त चेंज चाहती है बिहार की जनता। एक तरफ लोक है, दूसरी तरफ तंत्र है। एक तरफ लोकतंत्र का इलेक्शन हो रहा है, अब तंत्र अलग है। तो एनडीए की सरकार तो इस वक्त तंत्र को लेके सामने अपना इलेक्शन करा रही है। सारी चीजें यहाँ उन्होंने बाय हुक एंड क्रूक वो यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं बिहार के अंदर, लेकिन बिहार की जनता इस वक्त बिल्कुल इनके 20 साल के पीरियड को देखते हुए बिल्कुल तंग आ गई है। जो इस तरह से इन्होंने वोट खरीदने का काम किया, 10-10 हजार रुपए इनके अकाउंट में महिलाओं के भेज रहे हैं, लेकिन महिलाएं ये समझ रही हैं कि ये वोट का जमाना आया तो इन्होंने जो है हमारे जो है वोट को खरीदने का काम किया। 20 साल से ये कुछ कर नहीं रहे थे। अब जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो हम मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम रोजगार के ऊपर लड़ रहे हैं, पलायन के ऊपर लड़ रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर लड़ रहे हैं, हेल्थ के ऊपर लग रहे हैं, और ये हमारे मुद्दे बिहार के पब्लिक को अपील कर रही है। बिहार की पब्लिक महागठबंधन को में भरोसा जता रही है। जब वोट चोरी की बात होती है, ये कैंपेन लॉन्च की थी कांग्रेस ने, महागठबंधन इसका सपोर्ट करती है, पर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, मेरे रिपोर्टर्स ने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से बात की, काफ़ी सारे वोटर्स से बात की, उन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। नहीं, लोग तो इसकी अहमियत दे रहे हैं। महागठबंधन के जितने हमारे मैनिफेस्टो आए उसके ऊपर लोगों को भरोसा है, वो विश्वास कर रहे हैं। इसके जो है अलग हट के आप एनडीए का देखिए तो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो 20 साल के अंदर जो उन्होंने किया वो तो बता नहीं रहे हैं। अब लल्लन सिंह जी का बयान आया कि भाई ये गरीब लोगों को घर से निकलने न दो, ये वोट न देने पाए वहां जाके। तो इस वक्त जो है वोटर टर्नअप शाम तक आपको मिल जाएगा और बहुत ह्यूज वोटर टर्नअप हो रहा है। अगर ये जीत का दायरा कम होगा तो इनको जो है अपना बाई हुक एंड क्रूक ये उसमें अपना सफल हो जाएंगे वोट चोरी के मामले में। लेकिन अगर ये गैप ज्यादा आता है, वोटर टर्नआउट अगर ज्यादा बढ़ता है तो ये उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और बिहार में सरकार बदलेगी। जी, बात करें जो आरजेडी की परफॉर्मेंस है, पिछले असेंबली इलेक्शंस में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस
दी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस, अगर हम देखें 2020 के रिजल्ट या 2015 के रिजल्ट असेंबली इलेक्शंस के, क्या कांग्रेस आरजेडी को पीछे खींच रही है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है? नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हमारा महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है। हम लोग 243 सीटों पर मुस्तैदी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें न कोई आगे न पीछे, एक साथ है। एक हमारा कॉमन एजेंडा है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और वो बिहार की जनता देख रही है। और जो 17 महीने की जो सरकार की अब बात कर रही है, जो तेजस्वी जी ने परफॉर्म करके दिखाया, जो वादे उन्होंने 2020 में किए थे, 17 महीना मौका मिला उनको, वो सारे को पटल पर लाया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये तो पब्लिक देख रही है। इसलिए पब्लिक जो है महागठबंधन की सरकार लाना चाहती है, बदलाव चाहती है, और वो तेजस्वी प्रसाद यादव को अगला सीएम फेस देखना चाहती है बिहार के अंदर। जी। और वो इस वक्त जो है पटल पर भी दिख रहा है कि कितने लोग कितने उत्साह के साथ जो है अपने मतदाता का प्रयोग करने जा रहे हैं, अपने मतदान कर रहे हैं। और इस वक्त चेंज बिल्कुल नजर आ रहा है और चेंज होगा। ये चाहे जितने हरबे अपना लें, बाय हु कैन क्रूक, इलेक्शन कमीशन को लेके जी जो महागठबंधन जी की जी जी। और मुझे ये पार्टियों ने बात भी जिन बताइए, ये सीटों को, कांग्रेस का लीडर चीफ मिनिस्टीरियल फेस क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव को क्यों बनाया गया है? नहीं, ये तो देखिए, ये सबको तकलीफ यूं हो रही है कि एक महादलित का बेटा जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। बाकी हमारे यहाँ उनके सब दो, हमारे यहाँ अभी और जो डिप्टी सीएम होने हैं, वो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा और उसमें उनको भी जगह मिलेगी सबको। लेकिन अभी तो हम 243 सीटों पर अपना बहुमत की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग, और जनता का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस से भी आ सकता है और अदर पार्टियों से भी आ सकते हैं। लेकिन एक, जहां तक एक दलित के बेटे को आगे किया गया है कि इसको डिप्टी सीएम हम बनाएंगे, तो ये इंडिया गठबंधन के लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो इसको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भाई एक जो है दलित का बेटा कैसे डिप्टी सीएम बनेगा बिहार के अंदर। ओके, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलम जी। स्टे ऑन विद मी बिकॉज आई हैव अदर पैनलिस्ट। आई एम गोइंग टू क्विकली गेट इन मिथुन विजय कुमार. He has been patiently waiting. Thank you, Mithun. And quickly a response from you about, would you like to predict who wins the election? I may not be in a position to predict who wins the election, but I would definitely like to say that, we should not forget, where Bihar was in 2005. I heard other panelists speak. So the NDA under Nitish Kumar and, Narendra Modi's partnership, they have pulled Bihar out of an era of darkness and complete collapse. And before 2005, I would say there was no governance, there was only fear, that, jungle Raj. So now Bihar has moved from that lantern era to LED era. And when NDA took over, roads were, non-existent. Electricity was available only for a few hours a day. Today, if you look at Bihar, power supply is reliable, and even the poorest homes benefit from free electricity schemes. And Bihar consistently ranks among the fastest growing states in India. And definitely there are areas that require, a lot of development, but that is the development or the progress that you see over these years is because of the massive investment in infrastructure like national highways or the bridges. And the most Okay. reliable voter in Bihar today, as the previous panelist was speaking about, the Okay. woman voter, they vote for good governance and security, and that vote is something that NDA has earned over the years. And I believe, all these direct transfer schemes and, money credited directly to the accounts, GVK schemes and all, this is this is empowerment. It's not just vote bank. People are able to see real benefits, and the financial independence that is being given to women. All these things actually matter when it comes to, voting. And I think, given all these circumstances, NDA has a better edge. Okay, you speak about the governance model that has brought about a transformation in Bihar, but let's also speak about the 20 years of Nitish Kumar rule, from the point that he was termed as the Susashan Kumar, bringing about transformative change from the Mafia Raj and Jungle Raj to development, empowerment, infrastructure progress that the region of Bihar has witnessed. Do you think there is at this point of time anti-incumbency that is also trickling in the minds of the people? See, there is
a good amount of anti-incumbency, especially from the youth, young voters, I would say, because the Gen Z, they have not even witnessed Jungle Raj. So yes, for them, what matters mostly are the issues that are being projected by Mahagathbandhan. But ultimately, when you look at Bihar, it's all about caste. You know, caste is still the basic foundation of Bihar politics, and every political party starts with a clear set of voters. For the Mahagathbandhan, they have that, Muslim Yadav vote base that is solid for them, a reliable core that gives them a guaranteed 30% or so, and it's their fortress. Similarly, NDA has this upper caste vote, which votes them out of the historical opposition to RJD era. But the Okay. real power is the swing voters, especially the EBCs. So they would be the makers. They Okay. make up over a third of the population. And Okay. Chief Minister Nitish Kumar's long career actually proves one thing. He succeeded by strategically bringing these EBCs into his camp, and he gave them reservations and special schemes. So effectively pulling them away from the dominant categories. So Okay. I think, Okay, yeah. all right. I have also have with me Manish Bariyar. He is the BJP spokesperson. Manish Bariyar, about the, talking about the chances of the NDA, including the BJP, of winning the election, talking about anti-incumbency under the leadership of Nitish Kumar. Do you think that may impact the voting patterns for the BJP this time around? Namaskar to you and all my co-panelists and all the viewers. See, for the first time ever after 20 years, it would be unique that the current Chief Minister, Shri Nitish Kumar, is actually facing pro-incumbency. You are a journalist yourself, and you would know if you have gone to the ground and other journalists. There is no, in fact, anti-incumbency at all. In fact, everybody is saying that the kind of work he has done over a period of 20 years, he actually deserves another chance. So it's a very unique situation out here. This time, too, NDA is winning, and this time NDA is winning by a bigger margin what NDA did last time. Okay. See, there is this Mahagathbandhan is a bundle of contradictions. They are contesting against each other. 9 seats, 11 seats officially, and 61 seats without symbol they are contesting. So they are a divided house. Even yesterday, I would just like to share, just for appeasement of minorities, they, Mukesh Sahni had to sit his own brother in one of his seats. So you can understand that the entire Malla community, again, they have been shortchanged by Tejasvi Yadav. Okay. So you can understand these kind of contradictions are there. I don't think there is any chance for Mahagathbandhan to do anything. Okay, all right. But also talking about whether there is a consensus within the NDA that Nitish Kumar is the chief ministerial face of the NDA I don't know in the what makes elections, you think because like there that. have been a lot of leaders from the BJP who have been making contrasting statements, and Nitish Kumar in the past has come out and spoken about how this is his last innings. No, that is a different thing, but then I don't know what makes you think in terms of that, because the Prime Minister and the Home Minister have categorically said, and there was no talk about leadership at all in the entire election. The whole issue is about how we can take the developmental agenda further under his leadership. So those things do not, matter at all. I think that was just a rumor kind of a spread, because they are so fearful of the face of Nitish Kumar and his good work that the opposition kept on spreading these kind of rumors. Right, the entire leadership challenge is in their camp, in fact, because Tejasvi RJD had to put a gun on the head of Rahul Gandhi to ensure that he is announced as a chief minister candidate, and that is why Rahul Gandhi did what he did yesterday. Right, he is ensuring, Congress is ensuring that RJD loses. हम तो गए सनम, तुमको भी लेके जाएंगे. That is what is there, because there is no coordination between Congress, RJD, and other parties. Okay. Every party is on their own. So All right. All right. I'll quickly interrupt you, Manish. There is Samrat Chaudhary, the Deputy Chief Minister of Bihar, who is speaking to the media. Listen in. उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8,000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था।
आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने, और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वो चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते। ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे Okay.